I'm ready. Sir, can I share my screen? Yeah. Please. I just made you a co-host. You can share your screen. Yeah. Yes. Sir, can I start? Yes, Poonam, you can start. Yeah. नमस्कार, मैं पूनम ट्रेड प्लस की टीम की तरफ से इस वेबिनार जिसका विषय मास्टरिंग द करेंसी डेरिवेटिव्स है कि चौथे एपिसोड में शामिल हुए आप सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का स्वागत करती हूँ। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मिस्टर सेंदिल वीरप्पन सर से, जिनका फाइनेंस एंड बैंकिंग इंडस्ट्री में तकरीबन 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने एसबीआई कैप्स, आईसीआईसीआई बैंक और इक्विटा बैंक के साथ काम किया हुआ है और साल 2018 से ये बीएसई में एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम फॉर तमिलनाडु रीजन के साथ काम कर रहे हैं। और अब मैं हमारे आज के मुख्य स्पीकर श्रीमान आदित्य चोपड़ा को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। ये एक ऑप्शन क्वांट ट्रेडर है और इन्होंने फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए और बीई कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। और इतना ही नहीं, इन्होंने 14 साल कैपिटल मार्केट एक्सचेंजेस जैसे कि एमसीएक्स, एनसीडीएक्स और एनएससी के साथ काम किया है और ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वेलकम सर। Thank you. Very good evening. Thank you. ये वेबिनार शुरू होने से पहले मैं आपको ट्रेडप्लस के विशेषताओं के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। ट्रेडप्लस नव्या मार्केट्स का ऑनलाइन ब्रांड है। और यहाँ डीमैट अकाउंट खोलना, वो भी 0 एएमसी के साथ, बहुत ही आसान है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप 5 आसान से ईकेवाईसी स्टेप्स से 5 मिनट में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये एक ऑल इन वन अकाउंट है जहां आप इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स में आसानी से निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ऑफर करते हैं सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, मार्जिन ट्रेड फंडिंग, दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट जैसे कि आईपीओ, बॉन्ड्स, गोल्ड, ईटीएफ्स इत्यादि, एनआरआई इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी। ट्रेडप्लस का रॉकेट ऐप वेब और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो खास नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। और यहाँ अकाउंट खोलना भी बहुत ही आसान है और आप इस सिंगल ऐप से आईपीओ, स्टॉक्स और कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आसानी से निवेश कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप रॉकेट प्लस ऐप खास प्रो ट्रेडर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को रेफर करके साल का 2700 रुपए तक का भी कमा सकते हैं। आप ट्रेडप्लस द्वारा डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट्स में भी निवेश कर सकते हैं। और हम आपको मार्जिन ट्रेड फंडिंग में तकरीबन 50% फंडिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी भी ऑफर करते हैं। हमारे एजुकेशन मॉड्यूल्स द्वारा इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट को समझना काफी आसान हो गया है। आप हमसे सोशल मीडिया द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब हर जगह मौजूद है। और हमारे यूट्यूब में ट्रेडप्लस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडप्लस के प्लेटफॉर्म की जानकारी आसानी से मिल सकती है। एक बार फिर से मैं ट्रेडप्लस की टीम की तरफ से आप सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। थैंक यू एंड ओवर टू यू सेंदिल सर। Thank you, Poonam.
So good evening all. Hope everyone is understanding about currency derivative strategies from Aditya Chopra sir. So I would like to update about a recent update in BSc, and then I will give to Aditya Chopra sir. So BSc is having this many contracts with live with BSc. Currently, I want to update the main important thing from March 6th onwards. The strike price in option is changing. That is for USD INR, the strike price interval is 10 paisa. Yeah, currently it is now 25 paisa. That is the first update you want to have. All you want to get it, and then another update is in equity segment. In equity segment, currently the strike the tick size for equity segment is 5 paisa. Okay, for above stocks above 15 rupees. Okay, now it is going to be changed. The stock which is above, which is 100 and below, the tick size will be 1 paisa. So suppose if from March 1st onwards, suppose the stock is going to trade at 70 rupees or 90 rupees, 99 rupees, the stock will be the tick size of the stock will be at 1 paisa. So this thing you should understand. And regarding currency, the strike price interval is 10 paisa. So from March 6th onwards, the currency strike price will be 10 paisa moment, 10 paisa strike price will be in BSc currency derivative. So already these updates are given last week itself. So I will update what is the transaction charges at BSc. So currently we are charging 25 rupees per crore for futures. So totally the cost will be around 29.50. And for other exchange, they are charging around 90 rupees. So you can save while trading in BSc. So total cost for 1 crore, you can save up to 76 per crore. Okay. For options, the transaction fees is around 100 rupees. The total cost is 118 rupees. For other exchange, they are charging around 3,500 rupees plus GST. It is coming around 4,130. So doing transaction at BSc, you will save the cost. So for every 1,000 lots, we are charging 242 rupees, round trip 484 rupees. So saving is 1,258. So when you are increasing the volume, the transaction charges will be like this. So 50 crores you are doing, the lots, number of lots you are doing 6,098 lots, the saving will be 3,835. Like that, if you are doing 500 crores, lot size will be 60,976. And savings will be 38,000. So again, I am updating that the tick size movement, sorry, strike price movement from March 6th onwards, 10 paisa. So from 80.10, 80.20, 80.30, like that it will be there. And then transaction charges is 25 rupees per crore for futures, 100 rupees for options. And in equity market, the tick size movement is 1 paisa up to 100 rupees stocks. If it is moving above 100 rupees, it will go to 5 paisa. That too will be calculated every month end only. Within the month, if it is crossing 100 rupees, the movement will be 1 paisa only. So everyone is understand about the new changes from March onwards. Thank you all. Aditya sir, you can continue. Good evening, everyone. Thank you so much, sir. I hope my screen is visible, sir. Yes, sir. It's visible. Just a small recap, right? One small observation. Normally, past BAC data suggested that whenever any product or any strike interval change in currency market, volatility will increase, right? So as a trader or as a currency trader, volatility will increase. The past data suggested, right? And even our current market structure also suggesting same behavior. You can easily see we are at important conjunction zone. This is our sideways zone structure. So last time we discussed few strategy, right? I
normally I'm a hardcore option writer. So even I'm also sharing my current position also, but this workshop is only for education purpose. This is not for call or for any type of consultancy. I am using beautiful simple price pattern along with OI data. So price pattern suggested me this is sideways structure. Last time, even our price action behavior, we discussed some important observation, right? So normally we trade momentum only at double top, double bottom, but you can easily see this type of behavior is mostly when market is in sideways zone. So you easily encounter that after last week we got on 21st, I think, CPI or US inflation data came, and from that onwards, USD INR is in sideways. So I sold 83.50 call and I sold 82 put, right? Mostly I'm hardcore option writer based on my risk profile, right? This is very simple, very powerful. You can easily see my structure also. So in this structure, just sharing again same structure. So whenever I'm getting double top in my straddle chart, I'm repeating my word again. Whenever I'm getting double top, you can see this is classic double top and 1, 2, 3 breakout. This is Mohinder sir, this is beautiful lower high, lower top formation. This is beautiful short straddle chart. Yes, sir. Strangle chart, sorry, right? I use mostly out of the money option writing, which is normally I'm using aggressively because the market structure is in sideways. Yeah. Almost more than 70% time currency market are in sideways zone, right? Yes, sir. So Sandil sir already shared that from sixth onwards, the strike interval change, right? So Mohinder sir, I am expecting from sixth onwards, the volatility will increase in currency market. Currency market. Past data normally suggested that. Acha. Right. So मेरा प्राइस पैटर्न पे एंड ओआई पे मुझे दोनों जगह से सेम बिहेवियर मिले हैं, राइट? मैं एक बार आपको ओआई डेटा भी शेयर करता हूँ, फिर इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझाता हूँ, देन हम हमारे इसके आगे की पार्ट पे आएंगे. सो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? विच इज ये 28 की एक्सपायरी का डेटा है, 28 मार्च का डेटा है, राइट? आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा होगा कि हमें लोअर साइड 81, 50 एंड 82 लेवल पे बाइंग गोल्डन रेशियोज मिल रहे हैं एंड अबव 83 कॉल राइटिंग बिहेवियर है. महेंद्र सर आपको इजीली विजिबल है, ये ट्रू दिख रहा होगा पुट राइटिंग. जी सर. तो अपर जोन पे कॉल राइटिंग है, लोअर जोन पे पुट राइटिंग है. तो मार्केट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ओआई भी हमें आंसर दे रहा है कि साइडवेज स्ट्रक्चर है, बहुत छोटी रेंज में मूव कर रहा है, right? So OI behavior and price both are answering same. Right? Same from 21 onwards, we got beautiful consolidation setup. Right? So I sold 83.50, which is very safe zone. Right? Normally I'm doing next expiry or far expiry for positional trade. Right? Because of some extra time decay, some extra premium. Right? But after this breakout, right? Currently it is a double top. After this breakout, I will exit my call writing and I will increase my put writing and I will shift my position. I will end my position at this level also. If this price will break, let's say, I will change color first. If this price will break, this support zone will break, right? I exit my put and increase my call writing at this level, 83 level. Currently, I am holding 83.50 and 82, right? Currency market and especially trade in BSE is cost effective and best ROI, right? In terms of all asset class. So I am doing my homework based on highest OI change, highest change OI. You can
easily see. Mm-hmm. We got beautiful OI 83 level at call side में, Mm-hmm. and same picture we got beautiful OI at 82 level input, which is highest in nature, Yes. right? So this is shrinking day by day. Mhm. Chart is suggesting same, Y is suggesting same, and the most important, I am getting lower high, lower top formation and sometimes double top formation in Mhm. my Stengel chart. You can easily see this is classic double top. This is classic double top. And after every breakout, I am adding my position. So from 42 paisa to till now, this is at 29 paisa, right? Mhm. Ji. We have enough time, we have enough, and in terms of interest rate, normally I am fighting for 3 to 5%. And in currency market, 3 to 5% from Stengel. I'm not talking about Stader. I'm talking about fresh position, safe position, and for positional trade. Time decay also support me. This type of pattern, normally I use aggressively positional option writing, and I will easily get 3 to 5%, right? Which is very safe. Normally I'm using after event this type of trade, right? So in future, let's say we got some event, before event I will exit. After event I will make another position, right? So Mohinder sir, event टाइम पे मैं पोजीशन एग्जिट करता हूं क्योंकि मुझे रिस्क नहीं चाहिए. ये प्रोडक्ट मेरे लिए सेफ ट्रेड देता है जी. तो सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सारी एसेट क्लास में सबसे ज्यादा परसेंटेज रिटर्न मुझे यही मिलता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीएससी में मुझे कॉस्ट भी सबसे लोएस्ट लगती है. जी. हाँ. तो सारी एसेट क्लास में सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा रिटर्न का प्रोडक्ट है. तो ये मैंने जस्ट, हमने जो लास्ट टाइम जो भी हमने डिस्कस किया था उसी को मैंने शेयर किया स्ट्रेटजी फॉर्म में. बट आज का जो टॉपिक है, राइट, वो थोड़ा सा बोरिंग होगा. बट मेरे गुरु राजू सर ने बोला है कि आज जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं 90% वेटेज है. आई एम रिपीटिंग, 90% वेटेज है आज के टॉपिक का. हमने जो भी सिस्टम के बारे में बात किया है, जो भी डेटा के बारे में बात किया है, जो भी प्राइस एक्शन के बारे में बात किया है, उसका वेटेज सिर्फ लेस देन 10%. अच्छा. राइट. सो 90% वेटेज है कि हम हमारे होमवर्क में क्या पहले से टारगेट को इंक्लूड करें. टारगेट के हम बहुत सारे रास्ते हैं. कुछ नंबर सिस्टम यूज करते हैं, राइट, कुछ प्राइस एक्शन यूज करते हैं, राइट. तो मेरे गुरु से मैंने नंबर सिस्टम सीखा है, राइट. तो मोस्टली मैं नंबर सिस्टम के टारगेट यूज करता हूँ. जैसे अभी आपको मैंने ये शेयर किया कि मैंने मेरा स्टैंगल को 49 पे सेल, 44 पे सेल किया 46 पे. तो 49 मेरा रेशियो था बिकॉज 7 into 7 एक ऑड स्क्वायर रूट है. नंबर सिस्टम में 49 एक ऑड स्क्वायर रूट है. तो मेरा टारगेट है 5 into 5 यानी 25. मैं जनरली ऑड नंबर को सबसे ज्यादा वेटेज देता हूं. तो अगर 49 मेरा रेजिस्टेंस जोन है, मेरा स्टॉप लॉस है, और आप देख सकते हैं मुझे ऑलरेडी 1 to 3 भी मिला है यहाँ, राइट. तो जब तक ये 25 नहीं आता, मैं मेरा कुछ आधा 50% बुक नहीं करूंगा. महेंद्र सर जी. I will book my 50% at 25 and I will change my stop loss at, after 5 into 5, 25, my stop loss will change 6 into 6 at 36, which is profit in nature. I will change my stop loss in profit side. Jesus. Right? But I will change my stop loss only and only when price will reach at 25. So people normally use n number of combination for target. Some use Fibonacci, some use Gann number, some use pivot levels. Even I'm also using some important swing high low also, right? So based on homework, I will decide, right? But मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, कोई भी एक होमवर्क पे बाय हार्ट पोजीशन इंटर करने से पहले अपने टारगेट को, अपने रिस्क को, अपने स्टॉप लॉस को रेडी कर लीजिए. बिफोर ट्रेड जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, हम उसको पहले से टारगेट के लिए रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस भी रेडी कर लेते हैं. तो आज के सेशन में मैं टारगेट के बारे में बात करूंगा. आज के सेशन में मैं पोजीशन साइजिंग के बारे में बात करूंगा. आज के सेशन में मैं किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं, राइट, किस तरह से मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं.
जी सारे कॉम्बिनेशन जो मेरे हैं, जो मैंने मेरे गुरु से सीखे हैं या मैंने मेरे मेंटर से सीखे हैं, राइट, या जो मैंने एक्सपीरियंस करे लास्ट 10 ईयर की जर्नी में, या लास्ट 10 ईयर में फुल टाइम मतलब एग्रेसिव ट्रेड करता था जब से, ये वो जर्नी का पार्ट है। बट और भी तरीके हैं दुनिया में, वो भी बेस्ट है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, कोई भी एक गॉड को मानिए एंड बाय हार्ट फॉलो करिए, क्योंकि मेरा ये मानना है सारे टारगेट, सारे गॉड एक ही में है, राइट। तो सिंपल रखिए, क्योंकि सिंपल चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं और बड़े प्यार से एग्जीक्यूट होती हैं। इंप्लीमेंट करना बड़ा इजी है, फॉलो करना बड़ा इजी है। तो मैं नंबर सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट हाई लो को सबसे ज्यादा वेटेज देता हूँ। तो ये मेरा प्लान आउट है, आप कोई भी एक तरीका यूज करिए। जी सो एग्जीक्यूशन के क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं, बिलीव मी, लास्ट 10 ईयर डे बाय डे मेरा एग्जीक्यूशन बेटर हुआ है। और कुछ बड़े प्यारी मैंने मेरे कोर्स बना रखे हैं कि जो होमवर्क एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंच सकता वो कोई काम का नहीं, राइट। तो एज अ ट्रेडर लाइफ, अब लाइफ का जो पर्पस होता है, एज अ ट्रेडर का अगर पर्पस की बात करूं, तो अगर मैं मेरे होमवर्क को एग्जीक्यूशन तक पहुंचा दूं, इससे ब्यूटीफुल लाइफ नहीं हो सकती। तो एग्जीक्यूशन के क्या क्या तरीके हैं, तो जब भी मुझे एग्जीक्यूशन करना है, मैं नॉर्मली प्री फील्ड यूज करता हूँ। प्री फील्ड का मतलब ये होता है कि जब मैं एक एग्जांपल से शेयर करूंगा, शायद उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। 1 सेकेंड, लेट्स से इस प्राइस पे मुझे एक डबल टॉप दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ये क्लासिक डबल टॉप है, राइट, एट 46 47 के लेवल पे। तो मैंने मेरा ट्रेड इस 1 2 3 के नीचे पुट किया, राइट, क्योंकि मैं कुछ एल्गो ट्रेड भी यूज करता हूं करेंसी मार्केट में, स्पेशली स्ट्रैंगल में, तो वो मुझे सिंगल लेग पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का परमिशन देता है। तो आप देख सकते हैं, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, शायद जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सॉरी, सो महेंद्र सर, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत लगेगी, प्लीज अनम्यूट करिएगा। जी 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 सर, अनम्यूट में हूँ। You can easily see this is classic double top in triangle chart, यस सर। right? And I am getting this is 1 2 3 at this level. यस, bearish So over there. at double top level, I put pre-fill orders at this level. Then again I got beautiful follow-up at this level also. I again add my position at this level. Okay. Right? This is classic case of pre-fill order, because in congestion zone, I normally in congestion zone I will not add my position. I will add only after breakout. But in this type of situation, right, I generally put pre-fill orders. Right? So at pre-fill order, which is very easy, and normally it confirm my biasness actually. So after this breakout, we are getting beautiful lower high low top formation. Yes. Right? Which is again bearish in nature. So normally in option writing, I need double top and lower high low top formation. G. So this is pre-fill order. Normally lots of algo setups provide multi-leg orders, right? Sometimes you can fill stop loss order also, right? Sometimes you can put target order also in single execution trade, right? So I'm also using lots of combination of that, right? Before entering any trade, my SL, my target is ready, and even my plan is ready. When I will add my position and I will change my stop loss, which is modified in nature, because my guru guided me, whenever you want big profit come only in 2 conditions. First, you will add your position, you will scale your position in profit, and you will modify your stop loss in profit, because in loss my stop loss will trigger and I will
book my position and I will exit. So normally I put aggressively aiding my position in profit side. That means you are My- telling like you have to put a trailing stop loss, right? Yes. And Mahendra sir, normally me and my whole team and my whole student, who are now buddies to me, we normally put stop loss first. If Ji. I'm doing future buying, selling, I'm doing call buying, selling, I'm doing option buying, selling. First, we put stop loss, and then I will I will execute my trade. So my policy is very simple: stop loss first, risk is first. Ji. Mohinder sir, this is very important because if I'm ready with my stop loss, I'm accepting my risk, I'm accepting that loss, right? Ji. The burden or the pressure part will automatically release from my head. जी कितना रिस्क लूंगा मैं डिसाइड करना पड़ेगा पहले से डिसाइडेड है और वो सिस्टम में पुट है ऑलरेडी, मेरे माइंड में नहीं है, सिस्टम में है वो, सिस्टम राइट? डिप्लॉय करना पड़ेगा। अभी मेरा प्रोडक्ट स्ट्रेंगल में ट्रेड हो रहा है, तो मेरा एसएल जाने के बाद मेरा प्लान बी क्या है, मैं वो भी पहले से नोट करके रेडी करके रखता हूँ। सो प्लान बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एग्जीक्यूशन, क्योंकि प्लान ए तो पूरी दुनिया के पास हो जाता है कि आप बुलिश हो सकते हैं करेंसी मार्केट में, आप बेरिश हो सकते हैं, बट आपके लेवल पे ही आप बुलिश होंगे और आपके लेवल पे ही आप बेरिश होंगे, एंड वो लेवल ब्रेक होने के बाद क्या प्लान बी रेडी है? Mohinder sir, last 1.5 years, my guru guided me work on plan C also. In currency market, right? In other asset class also, I started my homework for plan C also. Plan C. Right? That Because normally, event time, currency market or other asset class market also is very volatile. In volatile market, plan C is also very important. Ji. That means So- you are having two options in your hand. In case if the plan A doesn't work, you have plan B. Now you can also have plan C, like that. And the most important, plan B will execute only when my plan A fails. Yes, yes, Right? exactly. Yes. 90% people normally don't accept failure, Ji. See. right? And my system, my pre-fill order already put in plan B. So मेरे plan B के execution किस level पे आने वाला है, वो already मैं system में डाल के रखता हूँ. तो वो जो acceptance है ना, कि मैं उस level पे fail होने वाला हूँ, वो मेरे system का part है. ये thought ही अपने आप में बड़ी profitable. जी. सही. मैं मेरे failure को accept कर रहा हूँ, वो easy नहीं है. जी. Right? But हर बिजनेस की एक कॉस्ट होती है. ये स्टॉप लॉस भी जो कि बहुत छोटा है, SIB नेचर है, राइट? वो भी मेरे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो मैंने पहले एग्जीक्यूट, यानी मैंने सिस्टम में पुट किया है, देन मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है. तो ये एग्जीक्यूशन ही हमें बचाएगा. मेरा ये मानना है सर, नॉर्मली first 21 days normally I started option writing practice, then next 21 days I started spread trading, next 21 days I put status single order, next 21 days I practice scaling. So step by step I practice and doing my mastering on that. Normally in we put a number of trades, right? Based on some news, based on some event, based on some some information, but as a combined level, the one thing is very important. I put daily, weekly, monthly limit, loss limit. If that limit permits me, I am accepting all type of order. So sometimes I will put only in USD. Sometimes I will put future orders also. So last time, few people also shared me that my strategies also work for future also, right? USD future or Euro future. So based on option data, future also very easy, right? Same 2B2T, same future OI concept last time we discussed.
same concept I am applying in future also, but I am using future only and only when my view is very big, because currency market is mostly 80% sideway market. In sideway market, I am using only and only in options. Whenever market will give break, right, breakdown or break away gap, right, then only I will use future, right? Otherwise, 80% time I am using only in options. Position sizing. Even maximum people using position sizing is, I mean, they are facing difficulties in position sizing. हमारी लाइफ का जो हाईएस्ट लॉस होता है उस टाइम हमारे पास हाईएस्ट पोजीशन होती है, जब हमारे पास लोएस्ट प्रॉफिट होता है, राइट? जब हम सबसे ज्यादा सही होते हैं तब हमारे पास लोएस्ट क्वांटिटी होती है। तो ये गलत है। मेरी पोजीशन साइजिंग नेक्स्ट 21 डेज तक कांस्टेंट रहती है। मेरे पास डेटा के होमवर्क के हिसाब से, मेरे एक्चुअल ट्रेड के हिसाब से नेक्स्ट 21 डेज की पोजीशन साइजिंग डिसाइड होती कि मुझे अब कितनी रिस्क लेनी है। और मैंने कहीं भी पोजीशन साइजिंग का नाम बोला है, दैट डजंट मीन कि मैंने रिस्क बढ़ाई है। सो मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं कि मैं इस पोजीशन साइजिंग को कैसे यूज करता हूं। सो नॉर्मली महेंद्र सर, मैं फिक्स क्वांटिटी यूज करता हूं फॉर नेक्स्ट 21 डेज। ओके, मैं प्रॉफिट में ही एवरेजिंग करता हूं, मैं लॉस में एवरेजिंग कभी नहीं किया हूं और ना करने वाला हूं जी। मैं गलत हूं तो मैं SIV स्टॉप लॉस डाल के बाहर हो जाऊंगा, नए सेटअप पे फिर ट्रेड करने के लिए रेडी हूं। मेरे पास हर दिन की 3 बुलेट और पूरे वीक की 5 बुलेट होती है। अगर वो 5 बुलेट फेल हो गई, उस वीक में कोई ट्रेड नहीं करूंगा। बट महेंद्र सर, लास्ट 5 ईयर मेरा वीकली एवरेज लेस देन 3 बुलेट। One second, I request participants to mute their mic so that the session to interrupt nahi hoga. Sorry sir, you can continue. So Mahendra sir, suppose let's say I got 10-point stop loss and I am doing 100 lots, right? Let's say, and if I get 5-point stop loss in spread, I will increase 200 quantity. If I will get 3-point stop loss, I will increase 300 quantity. In this scenario, I am increasing quantity, but I am not increasing my daily or weekly risk number. Normally, मैंने ये देखा है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट थे या जितनी भी मैंने अभी तक वर्कशॉप्स करी है, अभी तक ऑलमोस्ट 60 वर्कशॉप से ज्यादा मैं कर चुका हूँ। 2 वर्कशॉप मैंने यूएस मार्केट के लिए भी करी है। बट मैंने एक ही चीज फील करी है, जब भी हम बायस्ड होते हैं हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जबकि बायसनेस में सबसे लोएस्ट क्वांटिटी करनी चाहिए। मैं थोड़ा सिंपल कहता हूं, मुझे या दुनिया में किसी को नहीं पता है कि हमारे कौन से ट्रेड प्रॉफिटेबल होने वाले, राइट? सही है, किसी को नहीं पता है दुनिया में, महेंद्र सर, राइट? जी सर। अगर वो पता होते तो शायद मैं सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड करता, लॉस वाले करते ही नहीं। तो वो सिर्फ बॉट को पता है, राइट? तो मैं मेरे हर ट्रेड को इक्वल वेटेज देता हूँ, इक्वल रिस्क अलॉट करता हूँ, राइट? मुझे नहीं पता कि कौन से मेरे ट्रेड चलने वाले हैं। तो हम कितनी बार बोलते हैं यार ये ऑपरेटिंग लेवल पे चीजें आई हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें इनसाइड आई है, या हमें लगता है कि आज कोई तो ऐसी न्यूज आई है करेंसी मार्केट में कि हमें डायरेक्टली पता लगा। मेरा मानना है दुनिया में इस तरह की कोई न्यूज नहीं होती, कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। अगर वो होती है तो वो आपके पास नहीं आएगी, हमारे पास नहीं आएगी, हम रिटेल इंडिविजुअल के पास। अगर वो होती तो ना आप मेरा ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे होते हो, ना ये वर्कशॉप में आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है, प्लीज मेरी बात किसी को गलत लग सकती है, बट मुझे मेरी किस्मत का पैसा मेरे होमवर्क से मिले, ये फैक्ट, राइट? तो मैंने हर पोजीशन को एक रिस्क अलॉट किया हुआ है। बेस्ड ऑन रिस्क मैं मेरी क्वांटिटी डिसाइड करता हूँ, मैं मेरे प्रॉफिट को इन्वेस्ट करता हूँ। लेट्स से इस वीक मैंने 10,000 रुपीज अर्न किए, तो मैं फ्राइडे को 3,000 रुपीज की एक ऐसी स्प्रेड पोजीशन बनाता हूं जो पोजिशनल इन नेचर होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है।
राइट? और अगर मोहिंदर सर दैट 3000 अगर मुझे लॉस भी दे तो मैं ओवरऑल 7000 तो लेके जाऊंगा, प्रॉफिट लेके जाएंगे जी सर। राइट? सो करेंसी मार्केट में मैं बहुत एग्रेसिवली मेरे प्रॉफिट को इन्वेस्ट करता हूँ, राइट? बने हुए प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना, राइट? तो पूरे वीक मेहनत करके प्रॉफिट निकालता हूँ और फ्राइडे अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं उसको कुछ परसेंट मेरे प्रॉफिट को बुक करके इन्वेस्टमेंट करके जाता हूँ। अगर मेरी पोजीशन एग्जिट हो गई है तो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अगर पोजीशन एग्जिट नहीं हुई है तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो मैं करेंसी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, राइट? हम कितने पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितनी ऑप्शन स्ट्रेटजी बना सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल हम जितनी चाहे उतनी ही रिस्क मिलेगी। करेंसी में बेस्ट पार्ट ये है कि आप 10 पैसे के ऑप्शन को बाय या सेल भी कर सकते हो और आप 1 रुपए के ऑप्शन को भी बाय या सेल कर सकते हो। आपको कितनी रिस्क लेनी है, आप वैसा स्प्रेड, वैसा बटरफ्लाई इन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मैं नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्प्रेड में, मुझे जितनी रिस्क लेनी है उस हिसाब से मैं स्ट्राइक को चूज कर लेता हूँ। हाई वोलेटाइल मार्केट में मैं क्वांटिटी कम करता हूँ, राइट? लो वोलेटाइल मार्केट में मैं क्वांटिटी ज्यादा करता हूं क्योंकि मैं ऑप्शन राइटर हूं। जनरली ऑप्शन राइटर्स को रिस्क रिवार्ड रेशियो उतने अच्छे नहीं होते हैं। महेंद्र सर आपको ऐड करना पड़ेगा, कुछ लोगों का वेटिंग रूम में भी है। ऐड कर लिया सर, आई थिंक। थैंक यू। राइट? सो बेस्ड ऑन माय होमवर्क आई एम यूजिंग पोजीशन साइजिंग एग्रेसिवली, राइट? इफ आई एम गेटिंग 3 स्टार होमवर्क, आई एम गेटिंग 4 स्टार होमवर्k, I am getting 5-star homework, I will increase my position sizing, but I will not increase my risk profile. Sir, if I am getting weekly double bottom, if I am getting red flags, if I am getting buying golden ratio, and if I am getting buying in future OI also, right? This is my 4-star setup. Yeah. And first day itself, I shared my 5th point. If my system is suggesting buying or big buying zone, and I am also having same view, then this is my 5-star setup. If my system is giving me buy zone and I am in biasness for bearish, I will not punch my trade. So I will punch only those trades which align me with my system. If system is bullish and I am also bullish, then I will perform bullish position. If system is bearish and I am bullish, I will not trade. This is my 3-star, 4-star, 5-star setup. Based on this, I will increase my position in spread trading, because spread normally in options, spread giving me low stop loss or optimum risk reward ratio. Yes, risk reward ratio is very important, right? I am using normally 1:2.6 in currency market, which is very difficult in nature, because as the option writer, Mahendra sir, it is very tough to get optimum risk reward ratio in option writing. In option buying, you will get very easily, but in option writing, it is very difficult. For that, you have to modify your stop loss. You have to put some extra leverage for your profit side, but not your risk side. So I am using risk reward ratio based on my these 3, right? I am using aggressively 50-50 position. In first target, normally I book 50% profit, and rest I will modify my stop loss if my view is very big, right? If I am getting some sort of conflict, some sort of biasness, so I will put 80% quantity and 20 I will modify only. So I am using 3 type of system: 80-20, 75-25, and 50-50. But in currency market, I am aggressively using 50-50. At first target, I will book 50%. I modified my stop loss for remaining quantity and tailing my remaining 50% quantity till my all target will complete. But first 50%
I will book at my first target itself. Minus sir, that 50% will give me extra cushion to modify my stop loss and to get something out of this market. This much. Some profit at least. Some locking is important. जी sir. Stop loss rule and stop loss modification rule. Normally, I'm very aggressive in stop loss modification. I'm strictly use double top, double bottom, or last swing high as a stop loss, or breakout candle high as a stop loss. Because currency market is very, very low volatile market. We will, I mean, normally we have enough time. हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम जनरली मैं 15 मिनट चार्ट पे एग्जीक्यूट करता हूं, तो 15 मिनट पे जो रिसेंट स्विंग हाई होता है मैं उसी को चार्ट बेस पे स्टॉप लॉस यूज करता हूं. अगर वो स्टॉप लॉस मेरे कंफर्ट जोन से बड़ा है तो मैं मेरी फिक्स अमाउंट का स्टॉप लॉस यूज करता हूं. तो मैंने नॉर्मली 10 पॉइंट स्टॉप लॉस मेरे लिए फिक्स कर रखा है कि मैं स्प्रेड में इससे बड़ा नहीं डालता, और स्पेकुलेशन पोजिशनल ट्रेड में 20 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं डालता. 20 मुझे याद नहीं कि शायद लास्ट 1 ईयर में मैंने कभी यूज किया. मैं नॉर्मली मेरे मैक्सिमम ट्रेड जो है वो 10 पॉइंट से बड़े स्प्रेड के स्टॉप लॉस नहीं होते हैं. आप बोल सकते हो कि अगर अगले दिन करेंसी मार्केट 2 रुपीज 3 रुपीज गैप अप गैप डाउन हुआ तो क्या करेगा मोहिंदर सर? इफ करेंसी मार्केट विल open 2 rupees or 3 rupees gap up gap down, first I will exit my position and take break for whole week. जी. My stop limit, my daily limit, my weekly limit, if complete, I will stop that week and come again next week. So normally I use fixed number of points stop loss or recent swing high stop loss. Money management, which is very important before entering any trade, before plan any trade. I am using this type of model. Normally in any trade, my total risk is 0.5% per trade. If that trade is in profit, I will increase quantity in profit, right? 2% per day risk profile, 10%, right? Because if in option market writing, suddenly in let's say in future also, suppose next day some Fed meeting or some US meeting or some European meeting will come and suddenly we will get big gap up and gap down, right? I also put upper limit also, weekly upper limit and monthly upper limit, right? I'm talking about my daily, weekly, monthly upper loss limit. Mahendra sir, in trading, the most important element is when to stop. Is important. This is the most important. Yes. And I agree with that. to wait your best setup, it is very difficult because normally we are very hurried to execute it, right? It is very difficult to wait and wait and wait till your perfect setup will come, your perfect level will come, right? Sometimes at important level, I also miss some trades because of waiting, but in my system I have multiple confirmation, multiple points, right? Because of that, so I will get high probability setup, and sometime I will lose some opportunity also, but it is part of the game. मेरे फैक्टर्स ज्यादा हैं, मेरे पास फिल्टर ज्यादा हैं, राइट? इसीलिए मेरी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है मेरे ट्रेड्स की. तो मेरे ट्रेड्स बड़े आराम से आते हैं, बड़े स्लो होते हैं इन नेचर, और इनफ टाइम होता है मेरे पास, क्योंकि इस मार्केट में मैं ट्रेड करने नहीं आया, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड करने आया. तो नॉर्मली मैं मंथ के स्टार्टिंग में एक्सपायरी डे पे 21 डेज का नेक्स्ट 21 डेज का प्लान बनाता हूँ मेरे लिए, और
पूरा होमवर्क उसके लिए पहले से रेडी करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप होमवर्क रहता है कि मुझे अगले 21 दिन, अगले महीने, पूरा मंथ मार्केट क्या स्ट्रक्चर में दिख रहा है, सो मुझे उसी स्ट्रक्चर में मेरे ट्रेड ढूंढने हैं, उसके बाहर नहीं जाना है। क्रॉस एसेट मैं इक्विटी का साइड पे भी आपको बताऊंगा कि मैं इस तरह के डेटा पे काम करता हूं कि ओवरऑल आप NSDL की वेबसाइट से इस तरह के डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। मैं भी पिछले ऑलमोस्ट मोर देन 7 ईयर से ये डेटा कैप्चर कर रहा हूँ। जस्ट आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये डेटा किस तरह होता है, राइट, कि किस सेक्टर में, किस मार्केट में, और लास्ट 15 दिन में FII ने या FPI ने डेट मार्केट में, या इवन मैं जस्ट एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। ये दिख रहा होगा महेंद्र सर, आपको दिख रहा है? जी सर, जी सर। सोवियत बॉन्ड में कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड में कितना किया है, किस सेक्टर में कितना उन्होंने किया है, और लास्ट 15 दिन पहले और इस 15 डेज में उनका पैसा और कितना आया है। आई रिपीट, लास्ट टाइम से उन्होंने पैसा इंक्रीज किया है या और पैसा एग्जिट किया है। तो मुझे इस फाइल ने बड़ा हेल्प किया है इन करेंसी मार्केट, कि अगर उन्होंने यहाँ से एग्जिट किया है तो करेंसी में बड़ा जंप आता है हमेशा। यस, अगर उन्होंने पैसा यहाँ पे पुट किया है तो मुझे मार्केट में फॉल होने का एक्सपेक्टेशन मिलता है, और उसी टाइम अगर मुझे डबल टॉप डबल बॉटम मेरे रेड फ्लैग मिल जाए, आई मीन सेम आंसर अगर हर जगह मिले, इससे ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता, राइट। मैं एग्रेसिवली कमोडिटी मार्केट को फॉलो करता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट की। मैं इंटरनेशनल US और इंडिया के बॉन्ड मार्केट को या इंटरेस्ट रेट को भी फॉलो करता हूँ। मैंने एक रूटीन में बना लिया है कि हर दिन मॉर्निंग की शुरुआत में ये डेटा से करता ही हूँ। एक सिंगल पेजर मैंने अपना एक डैशबोर्ड बना रखा है, तो यस मैं आपको शेयर कर देता हूँ। 1 सेकंड सर, माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? आई एम शोइंग investing.com which is free in nature, हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। यस, US मार्केट क्या है, इंटरनेशनल इंडेक्सेस क्या चल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स क्या चल रहा है, USD आना है, या एशियन मार्केट क्या है, कमोडिटीज क्या है, US के इंटरेस्ट रेट क्या है, पूरी पिक्चर मेरे पास मॉर्निंग में रेडी हो जाती है। तो मेरा व्यू अलाइन हो जाता है मेरे सिस्टम के साथ। एंड ऑब्वियसली ये सिस्टम विथ प्राइस, विथ OI डेटा, विथ रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड पंच होना बड़ा इजी हो जाता है। मैं इंपॉर्टेंट पूरी साल की इवेंट अपने मोबाइल में अलर्ट लगा के रखता हूँ। नॉर्मली US का इंटरेस्ट रेट, US का इन्फ्लेशन डेटा, RBI मीटिंग, यूरोपियन मार्केट की मीटिंग, एंड स्पेशली क्रूड ऑयल की डिमांड सप्लाई मीटिंग, बिकॉज एज ए इंडिया हम नेट इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं। हमारे यहाँ क्रूड एंड गोल्ड का इंपोर्ट बहुत बड़े नंबर पे होता है, तो मैं उसके डेटा को टेक करता हूँ फॉर माय पोजिशनल ट्रेड। और ये होमवर्क में वीकली करता हूँ सर। ये होमवर्क में नॉर्मली वीकली करता हूँ, ये रोज नहीं करता। ये वाला होमवर्क तो 15 डेज में एक बार डेटा मिलता है हमको, बट बड़ा हेल्पफुल होता है। So, मेरा ये मानना है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं किस तरह से अपने ट्रेड को प्लान करता हूँ, राइट, जो मैंने मेरी जर्नी शेयर करी, राइट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज एग्जीक्यूशन, राइट। मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करता हूँ, राइट, कि कब मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना है, कब मुझे राइटिंग का ट्रेड करना है, कब मुझे फ्यूचर का ट्रेड करना है, कब मुझे स्प्रेड का ट्रेड करना है, वो होता है बेस्ड ऑन हिज पावर, राइट। तो मैंने मेरा एक एलिमेंट स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया था कि मेरे टोटल 5 एलिमेंट है, राइट। अगर आपने मेरे 5 एलिमेंट के बारे में फर्स्ट हमारा जो प्रेजेंटेशन था, मैं स्टार्टिंग की मेरी स्लाइड पे जाता हूं जहां से आपको शायद आंसर मिले। 1 सेकेंड, जैसे लाइफ इन 5 एलिमेंट से बनी है, वैसे मेरे लिए ये 5 एलिमेंट है ट्रेडिंग के। OI डेटा, वॉल्यूम, प्राइस एंड टाइम एंड वेलोसिटी। ये कंपोनेंट अगर मेरे साथ आता है, इसका मतलब ये है कि कितने टाइम में कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ है,
नॉर्मली करेंसी मार्केट रेंज बाउंड मार्केट होता है, बट मैं टाइम एलिमेंट को बहुत एग्रेसिवली टेक करता हूं। और जनरली आज का टॉपिक इतना हमारा वैसा नहीं है कि मैं, क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट सेशन चाहिए टाइम एलिमेंट के लिए। बट महेंद्र सर, सिंपल वर्ड में अगर मैं ये बोलूं कि लास्ट 10 डेज में करेंसी मार्केट में 25 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, और किसी भी दिन लेस देन 10 डेज में अगर 25 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट हो जाए, तो मुझे ये आंसर मिल रहा है कि मार्केट में पावर बढ़ गई। यस, एग्जाम्पल से थोड़ा सिंपल कहता हूं मैं। लेट्स से हम एक इस तरह का जर्नी बना रहे हैं, ये हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है, और फ्रॉम रिसेंट स्विंग लो से रिसेंट स्विंग आई 10 डेज है, और 10 डेज में 25 पॉइंट बढ़ा है मार्केट, लेट्स से, राइट। एंड किसी दिन मार्केट इस स्ट्रक्चर के बाद वापस गिरे और अगेन नए स्ट्रक्चर लेस देन 10 डेज में, अगर ये लेट्स से 9 डेज में ही 25 पॉइंट की जर्नी इस वाली वेव में हो जाए, मैं कलर चेंज करता हूं तो शायद इजीली विजिबल होगा। पहले स्ट्रक्चर में 10 डेज में 25 पॉइंट्स हुए थे। सेकेंड स्ट्रक्चर में अगर 9 डेज में 25 पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब है कि मार्केट में पावर ऊपर की साइड है। कम दिनों में अगर ज्यादा मूवमेंट हो, मार्केट वोलेटाइल इन नेचर हो, तो मैंने मेरी प्रोडक्ट की रेंज पहले से फिक्स कर रखी है, मैं उन्हीं प्रोडक्ट में ट्रेड करता हूं। तो मैं फिर से एक बार मेरे प्रोडक्ट की रेंज आपको शेयर करता हूं, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस करी थी। बट इसकी पावर मुझे पता करने के लिए, राइट, कितनी क्वांटिटी में या कितने वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है, उस बेसिस में मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे कितना बड़ा व्यू बनाना है। आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट। If my view is big, let's say Mohinder sir, if my view is very big in currency market, right, and in less time, I will use this future buy with put hedging. If I am getting bullish view, but the pace is slow, right, I will use spread trading. If market is in sideways zone, I will use straddle and strangle. If market is directional but little confusion, I will use ratio trading. If event time is there, normally event time I am hardcore option buyer. In event time, normally I will use spread buying. So based on event, based on expectation, I will change my product selection. Mahinder sir, it is very important to choose right product, and it is very, very important to choose right kind of strike price in options. Normally, my Excel will give me complete picture, complete answer, which strike is good for me for buying and which strike is good for me for selling. Mahinder sir, my screen is visible easily? Yes sir, yes sir. I am getting call IV and put IV. You can easily see? Yeah. You can easily see put IV is increasing. Yes? Yes sir. मैंने एक अलर्ट डाला हुआ है, कलर चेंज डाला हुआ है, आपको दिख रहा है? जी सर, जी। So 80 इन पुट साइड में 8450 में कंटिन्यू पुट साइड में आईवी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कोई इसको बाय कर रहा है। आईवी इंक्रीज कब होती है? जब कोई बाय करता है। आईवी इंक्रीज कब डिक्रीज कब होती है? जब उसको कोई सेल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 83 के कॉल को आईवी ने माइनस दिया हुआ है। यस, सो मेरी एक्सेल मुझे बताती है कि किस आईवी में सेलिंग आ रही है और किस आईवी में बाइंग आ रही है। मैंने एक स्कैनर लगा रखा है कि 3% से ज्यादा
किसी में भी मूवमेंट हो आईवी में, वो स्ट्राइक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं उस स्ट्राइक को राइटिंग करूं, उस स्ट्राइक को स्प्रेड में यूज करूं, उस स्ट्राइक को मैं स्पेकुलेशन में यूज करूं, उस स्ट्राइक को मैं मेरे स्ट्रेडल में यूज करूं, वो मुझे हेल्प करेगी। तो महेंद्र सर एक लाइन बड़ी सिंपल कर दूं, जी सर बताइए। जिसमें आईवी सेल आ रहा है मैं उसको राइटिंग के लिए यूज करूंगा, और जिसमें आईवी बाय आ रहा है मैं उसको ऑप्शन बाइंग के लिए यूज करूंगा। बड़ा सिंपल हो गया। मेरी एक्सेल मुझे ये आंसर देती है कि बिग प्लेयर्स, स्पेशली बड़ी बैंक्स, स्पेशली बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स कौन सी स्ट्राइक को बाय कर रहे हैं और कौन सी स्ट्राइक को सेल कर रहे हैं। बेटर है मैं भी उन्हीं में अपनी पोजीशन बनाऊं, क्योंकि जब आप नदी के फ्लो के साथ स्विम करते हो, स्विमिंग बड़ी इजी हो जाती है। यस 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 सर, जी सर, जी my सर। point is very simple, but it has very important two aspects. One is OI data and second IV, that is power, that is volatility, and that is based on current market structure. मैंने volatility और IV को differentiate मैं कर देता हूं। अगर हम स्पॉट मार्केट के पास्ट परफॉर्मेंस को अगर हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करेंगे तो उसको बोला जाता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। बट अगर मैं करंट मार्केट पे जितना प्रीमियम ट्रेड हो रहा है, अगर उससे मैं करंट मार्केट की, लाइव मार्केट की वोलेटिलिटी निकालूं, उसको मैं आईवी बोलता हूं। एक हिस्टोरिकल डेटा से आता है और एक करंट मार्केट पे जिसपे ट्रेड हो रहा है उससे आता है। बड़ा सिंपल हो गया। जी सर। आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी है, तो मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूं आईवी एंड डिक्स को। मैंने सिर्फ ये बोला कि जिसकी आईवी बढ़ती जा रही है उस स्ट्राइक को मुझे बाइंग के लिए यूज करना है, और मैं नॉर्मली इन द मनी ऑप्शन बाय के लिए यूज करता हूं। राइट महेंद्र सर, लास्ट टाइम इवन स्टार्टिंग सेशन में ही मैंने शेयर किया कि आईवी में जिसमें भी इन द मनी है मैं उन्हीं को बाय करता हूं, बट उसमें आईवी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है आईवी कब बढ़ेगी, जब किसी बिग प्लेयर ने पोजीशन बनाई होगी बाइंग साइड की, उसकी प्राइस बढ़ रही होगी बाइंग साइड में। इफ अगर आईवी माइनस है, मेरे लिए सबसे सेफ जोन में है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सर कि 83 एंड 84.50 इसमें आईवी माइनस हो रही है कॉल साइड में। यस यस सर। सर मैंने स्टार्टिंग में मेरा एक एग्जांपल शेयर किया था। मैंने जब ये ट्रेड पंच किया था, आपको दिख रहा होगा इसमें 83.50 यूज किया है। ये 83.50 जब मैंने पंच किया था 21 को, 22 के दिन, इस दिन, तब मुझे ये स्ट्राइक मेरे आईवी में सेलिंग मिली। ओके महेंद्र सर, नॉर्मली बिग बैंक्स, बिग इंपोर्टर एक्सपोर्टर या बिग क्लाइंट्स वो कॉल को भी सेल करते हैं, पुट को भी सेल करते हैं, और मार्केट की क्लोजिंग हमेशा उसके बीच में आती है, जिससे उनके कॉल भी जीरो हो जाते हैं और पुट भी जीरो हो जाता है। हमें लगता है कि अगर मार्केट बढ़ते जा रहा है तो उन्होंने पुट ही बेचा होगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उन्होंने कॉल ही बेचा होगा। ये गलत है। वो दोनों में अपनी पोजीशन बनाते हैं, और वो पोजीशन जहां कॉल और पुट की होती है, मार्केट हमेशा उसके बीच में एक्सपायर होता है, जिससे दोनों में उनको प्रॉफिट मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो पोजीशन मुझे आईवी से मिल जाए, मेरा काम कितना इजी हो जाएगा। सो ये स्ट्राइक जो मैंने यूज करी है वो आईवी डेटा से लिया है। मैं 83 भी ले सकता था, 83.50 भी ले सकता था, 84 भी ले सकता था, बट अगर मुझे मेरे स्कैनर ने ऐसा आंसर दिया कि इसमें 3% से ज्यादा आईवी माइनस हुआ है, वो 83.50 कॉल एंड 82 पुट, इन दोनों स्ट्राइक में मुझे अलर्ट मिला था कि किसी ने इसको सेल किया है। एंड Mohinder sir, price action also suggesting same answer, double top and fill lower high lower top, right? And even overall structure is also bearish. Yes, yes. We can easily see open interest is also increasing. So normally price topping, OI increasing. This is classic case of short built up. Yes. In option data. Same answer I am getting
everywhere, whether it is OI, whether it is price, even I ignored some volume data in this, but I am also getting beautiful volume increasing at this level, right? That means in every double top, big players is selling both call and put. That is why I'm getting alert in IV selling. IV, so normally IV is very difficult to complete in single day or less than 1 hour, but it is very important, right? आप ये किसी भी ऑप्शन कैलकुलेटर से आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी जगह आपको इजीली ऑप्शन कैलकुलेटर इजीली मिल जाएगा। सिर्फ करंट मार्केट प्राइस अगर आप उसमें पुट करेंगे और करंट प्राइस के साथ जो उसमें टाइम टू एक्सपायर वो सब डालेंगे तो आप इजीली करंट आईवी इस टाइप की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना सिंपल हो सकता है। मैं भी ये सारा काम मैनुअली करता हूँ ऑप्शन कैलकुलेटर में। मैं हमेशा आज का सेशन उस पर नहीं है, बट मैं ऑप्शन कैलकुलेटर में हर स्ट्राइक का थ्योरेटिकल प्राइस भी निकाल के रखता हूँ और उसका करंट मार्केट प्राइस भी, जिससे मुझे कंपैरिजन मिल जाता है कि करंट मार्केट प्राइस जो आउट ऑफ द मनी है वो ओवर प्राइस चल रहा है या अंडर प्राइस चल रहा है। आई रिपीट, महेंद्र सर, जी सर, मैं थ्योरेटिकल प्राइस भी निकाल के रखता हूँ ऑप्शन कैलकुलेटर से, बिकॉज अगर आउट ऑफ द मनी ओवर प्राइस है, आई एम रेडी कि मुझे उसको सेल करना है, राइट? बट ये सारा होमवर्क में जो नॉर्मली पोजिशनल ट्रेड होते हैं मेरे, मैं वीकली लेवल पे करता हूँ, राइट? बट अगर इस पूरी वर्कशॉप से आप मुझसे सिर्फ 2 ही चीजें अगर मिनिमम करना चाहें तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरे प्राइस पैटर्न और ओआई गोल्डन रेशो, इन 2 से ही अगर आप ट्रेड करेंगे, महेंद्र सर ऑलमोस्ट मोर देन 5 आपके क्लाइंट्स मुझे अपना होमवर्क डेली शेयर कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, राइट? एंड they are following only 2 setup, double top, double bottom and golden ratio, which is working beautiful, because it is very simple in nature, right? Very low risk in nature and very optimal, very highest risk reward ratio, and the ROI is very good. So is there any doubts we can any doubt or yeah, or I will first complete within 5 minutes. I'm completing my session and then we will start question answer. Sure, please. Thank you, sir. Cross product we discussed. I discussed some product selection criteria. So based on my view, I am using aggressively volume based, spread based, time based, big move, high volatility we already discussed, right? This is my risk management tool. Normally for every overnight option writing, my checklist stays compulsory. I am putting my hedging position. Hedging is very important for overnight position. I am strictly put spread trading. So sorry. 3 bullets is very important for risk management, because if I am wrong in 3 times, I put simple sorry and exit my position and stop my journey particular day. This is very important. Books, right? Risk management. This is the only holy grail in currency market. One can be profitable trade only even when the rate of 50, 40 and 30 best. Position sizing is very important. Risk reward ratio. This is very important concept, right? Maximum adverse execution and maximum favorable execution. मैं सही हूं तो मैं कितने रिस्क ले रहा हूं और मैं गलत हूं तो कितने में रिस्क ले रहा हूं, राइट? तो आज का सेशन में मैं जस्ट ये एक थॉट आपके लिए स्टार्ट करूंगा कि मैंने लेट से होमवर्क किया है कि कल मुझे 80 to 50 का पुट सेल करना है 40 पैसे में लेट से, और मेरा 50 का एसएल है। महेंद्र सर, जी सर बताइए। लेट से आफ्टर मार्केट टुडे
मेरा होमवर्क सजेस्ट कर रहा है कि मुझे 80 to 50 का पुट सेल करना है और जिसका प्राइस है 40 पैसा और मेरा स्टॉप लॉस है 50 जी राइट। लेट्स से कल अगर वो 45 पैसा खुले जी राइट, तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो गया 5। जी अगर मैं 40 पैसे पे 10 पॉइंट की रिस्क में 100 लॉट कर सकता हूं, तो क्या मैं 5 पॉइंट की रिस्क में 200 लॉट कर सकता हूं सेम रिस्क में? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं आई गेस। मैं एग्रेसिवली इस मॉडल को यूज करता हूं सर, कि अगर मेरी रिस्क कम होती किसी ट्रेड में तो मैं मेरी क्वांटिटी बढ़ाते जाता हूं, और अगर मेरी रिस्क बढ़ती है तो मैं मेरी क्वांटिटी कम करते जाता हूं, क्योंकि यहाँ पे प्लस होना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबल होना इंपॉर्टेंट है, चाहे कम हो चलेगा। जी This is my beautiful, my guru gave me this this important rules. Focus only providing some logical stop losses, right? Whether it is from any moving averages, आप pivot use करते हो, right? Important high low का SL रखते हो, तो ट्रेड करने से पहले लॉजिकल SL आपके पास होना चाहिए। Focus only execution part. Focus trade management. Book 50% 1:2 or maybe 1:1.5. डिपेंड्स ऑन आपकी रिस्क एपेटाइट, बिकॉज ऑफ आपका रिस्क कितना है। वंस प्लान ए अगर हो गया है राइट, तो प्लीज प्लान बी के लिए भी रेडी रहे। ये मेरे 3 इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे मेरी एक कमाल की बुक है जो मुझे मेरे गुरु ने 100 टाइम्स पढ़ने के लिए बोली थी, जिसका नाम है जॉन पाइपर, राइटर है, द वे टू ट्रेड। इससे बेस्ट मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक नहीं देखी। उसमें बड़ा सिंपल और कमाल के टूल्स लिखे हैं। कट योर लॉसेस, जो कि मैं यूज करता हूँ SIB में, स्मॉल रिस्क लेके। रन योर प्रॉफिट, मैं हमेशा स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करता हूँ। एंड ट्रेड सिलेक्टिवली, मैं मेरे परफेक्ट ट्रेड सेटअप में ट्रेड आने का वेट करता हूँ। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट टूल है फॉर ऑप्शन के लिए और इन सारे मार्केट के लिए। इनफैक्ट ये मेरा ट्रिपल ट्रेड सेटअप है। मैं गोल्डन रेशियो बहुत एग्रेसिवली यूज करता हूँ, मैं ऑप्शन के रेड फ्लैग बहुत एग्रेसिवली यूज करता हूँ, राइट। मैं SIB छोटा SL ढूंढने की कोशिश करता हूँ प्राइस पैटर्न के थ्रू, और जब तक प्राइस एंड OI मुझे सेम आंसर नहीं देती मैं ट्रेड पंच नहीं करता हूँ। सो विथ SIB आई एम टाइम स्ट्रिक्टली। सर लास्ट पॉइंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मेरे हर दिन के, हर वीक के, हर मंथ के ट्रेड को नोट करता हूँ, और मैंने उसमें क्या अच्छा किया, मैंने उसमें क्या गलतियां करी है, कहां पे गलतियां करी है। मैं हर साइकोलॉजिकल लेवल में अगर गलती करी है तो मैं ये डे वाइज नोट करता हूँ और हर वीक इसको मॉनिटर करता हूँ। जी महेंद्र सर, 90% लोग अपने ट्रेड को ना लिखते हैं ना फीडबैक कलेक्ट करते हैं। जी सर जी, मेरा मानना है कि अगर लाइफ में कोई अगर सक्सेसफुल ट्रेड करना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो ये फाइल हमें हेल्प करेगी। हम कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो ले रहे हैं, कहीं हम स्टॉप लॉस बड़े तो नहीं डाल रहे हैं, क्या हम कंटिन्यू लॉस बना रहे हैं, सारे आंसर मुझे यहीं से मिलेंगे। और इसमें मुझे क्या अच्छा कर रहा हूँ वो भी नोट करना है, वो क्या गलती कर रहा हूँ वो भी। जो अच्छा करूँ वो बढ़ाते जाओ, जो गलत करूँ उसको एलिमिनेट करते जाओ, उसको रिमूव करते जाओ यहाँ से। सही बात है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जस्ट लास्ट स्लाइड, मैं हाईएस्ट OI का होमवर्क डेली करता हूँ, हाई चेंज OI का होमवर्क डेली करता हूँ, मैं एग्जिटिंग का होमवर्क भी डेली करता हूँ। ये मुझे बड़ा हेल्प करती है, राइट। मैं 30% की पावर आइडेंटिफाई करता हूँ कि कॉल OI ज्यादा है 30 से, कि पुट OI ज्यादा है 30 से। मैं 2v2t ढूंढता हूँ मेरे इंपॉर्टेंट जोन में, अगर वहीं पे मुझे OI सेटअप से मिले, राइट। वीकली एंड मंथली इंपॉर्टेंट है, बट फ्राइडे का डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई रिपीट, करेंसी मार्केट में फ्राइडे का डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू सो मच सर। सो हम अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं सर। श्योर सर, श्योर। आई थिंक ऑडियंस में से कोई को डाउट होगा तो यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड आस्क। सर वन क्वेश्चन, डू यू नीड टू कीप वॉचिंग? सर मेरा एक बड़ा प्यारा एक मेरे गुरु ने एक टूल दिया है स्टॉप वॉच का। मैं जितने टाइम होमवर्क करता हूँ
उसके 1/3 से ज्यादा टाइम स्क्रीन पे कभी स्पेंड नहीं करता। अगर मैंने स्टॉप लॉस डाल ही दिया है, राइट, ट्रेड करने के पहले ही ट्रेड पंच हो गया है मेरा, तो फिर स्क्रीन पे बैठने की जरूरत ही नहीं मुझे, राइट, क्योंकि हम अपनी मर्जी से उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। मार्केट की फितरत है, उसको जब हमें प्रॉफिट देना है, जब लॉस देना है, वो अपनी मर्जी से हमें दे देगा। तो मेरे हाथ में जो है वो मैंने सिस्टम में पंच कर दिया है। The only Right? thing, In my hand, I am putting stop loss first and then execute. Right? Normally, I put maximum 45 minutes in a day on screen. Max to max 45 minutes. again, I think he has a question. Bharat Modi, you can just also unmute. Bharat Modi, आप unmute करके भी questions पूछ सकते हो. I think any participants कोई doubts होगा तो unmute कीजिए. आपका सवाल पूछिए सर से. Yes, even one more question. Yes, मैंने 3 बार बोला है, सेम सेटअप अगर मुझे स्टॉप लॉस 2 बार ले चुका है तो मैं थर्ड टाइम अगेन ट्राई करता हूँ। मेरी चेकलिस्ट मुझे 3 टाइम्स अलाउ करती है। अगर 3 टाइम्स खत्म हो गया फिर मैं उसके बाद उस वीक में या उस दिन ट्राई नहीं करता। एक सेटअप पे 3 टाइम ट्राई करता हूँ, पूरे वीक में 5। यस, उसके बाद मेरा डे एंड हो जाता है या वीक एंड भी हो जाता है समटाइम। बट लास्ट टचवुड लास्ट 5 ईयर में पूरा वीक आज तक स्टॉप नहीं हुआ है। Does anyone have any questions? Questions कोई सवाल है क्या पूछने के? तो महेंद्र सर 2 ही कंडीशन होती क्वेश्चन नहीं होने की। सबको सब कुछ समझ आ गया या कुछ नहीं समझ आया, राइट? People understand everything or else they won't understand anything. So फिर से भी एक पूछा है, what is the optimum money to be kept? मेरा मानना है कि ऑप्शन राइटिंग लेस देन 25,000 में पॉसिबल, लेस देन 25,000 हम स्प्रेड कर सकते हैं, हम हेज के साथ ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। सो आई एम हार्डकोर ऑप्शन राइटर। लोगों को माइंड में है कि फॉर ऑप्शन राइटिंग मार्जिन बड़ा लगता है, नहीं, गलत है। अगर मैंने हेज कर रखा है तो मुझे मार्जिन बेनिफिट मिलता है जी, राइट। एंड आउट ऑफ 25,000 मार्जिन मैं यूज करता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम इन अ सिंगल ट्रेड 2% की रिस्क। एंड अगर मैं 25,000 को ब्रेक करूं तो मैं उसको उस जो भी आप एक्स अमाउंट डालते हैं, आपको उसको रिस्क एलोकेट कितना करना उस पे पोजीशन बनानी। नॉर्मली हम जितना पैसा डालते हैं उस पे पोजीशन बनाते हैं। मैंने अगर 10 लाख लगाया तो 10 लाख की पोजीशन लूंगा, नहीं, मैं 10 लाख पे 2% की पर डे मैक्सिमम रिस्क लूंगा, तो आपकी पोजीशन साइजिंग और रिड्यूस हो जाएगी। सही है। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो जितना प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करोगे उतने विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। Then what will be the margins or margin required for selling a call or put? You can easy, I mean, With the example, I think you there can. are lots of margin calculators available in Google also, sir. Right? But for spread with hedging in option writing, you will get margin benefit. Normal option writing will reduce to 50 to 60%, and even sometimes 40 to 60%. जी, सही है। I think आज का मटेरियल मिल सकता है सर। I think last 4 documents you have been shared, I guess. मैंने आज के जो टॉपिक्स थे वो मोस्टली डिस्क्राइब करे सर, मतलब उसमें राइटअप जैसा कुछ भी नहीं है। Right up, sir. Okay. Right. Sure, sir. I think Suresh asked a question, I guess. Yes, please. 10 points SL meaning 10 paisa or 10 tick 10 points? 10 पैसा की स्प्रेड, ये मेरी मैक्सिमम लिमिट स्प्रेड ट्रेडिंग। So each tick is 0.0025 in USD INR, right? Yes. Any other questions, guys? When to stop a trading system? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि मेरा अगर 2% का लिमिट हो गया उस दिन मेरे लिए वीकली लिमिट, ये आप आइडेंटिफाई करें अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करके। मैंने मेरा सिस्टम बैक टेस्ट किया, राइट, उस बेसिस पे मैंने अपना सिस्टम बनाया, उस पे रिस्क एलोकेट करी, और वो रिस्क मैं कंफर्टेबल हूँ। रिस्क भी आप कंफर्टेबल होना इंपॉर्टेंट है। आपकी पॉकेट में हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट हो, बट उस अमाउंट का
0.1% भी अगर जाने के बाद अगर आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है तो आपको रिस्क और कम लेनी चाहिए। तो रिस्क आपके पॉकेट की कैपेसिटी पे नहीं डिपेंड करती है, आपकी हार्ट बीट पे डिपेंड करती है। Can you once again show the slides, various strategies का दिखाया था ना आपने? जो मेरी स्ट्रेटजीज थी सर, जी सर, जी सर, वो 7 स्ट्रेटजीज है ना, वो 7 स्ट्रेटजी, राइट, सिंगल पेज है जो था मेरा स्ट्रेटजी का। स्ट्रेटजीज तो 23 24 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस में, बट मेरा यूनिवर्स यही, ये मेरा यूनिवर्स है। लास्ट टाइम वी डिस्कस सर, इवन वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड। Yeah, YouTube में already videos upload है. Suppose if you guys missed out our webinar, डिटेल में बात किया इन सब चीजों पे। जी। Sure, sir. I think any other questions, guys? Any other questions? कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, चैट में भी पूछ सकते हैं, we can read it out, or else you can just unmute yourself and ask questions. Hello. Yes, please. Hello. Yes, Hello, sir. Yes, sir. Sir, this system can be used for Bank Nifty. Bank Nifty. Anand, this is a mastering of currency trading. Okay, it's like 4 episodes. This is the last episode. Okay. Okay, but option buying and writing is the same process. So it is the same system or some other things is involved. Then master is sitting right here. You can just ask with them. Okay. जी आदित्य सर, आप बताइए please. Same system in every asset class. Same system in US market also. Same system. I know only one system. Before that, I used to use 7 to 8 indicators technical. Now I'm using plain vanilla price action in all asset class. Okay, sir. Hello, sir. Sir, Yes. one more thing. Actually, whenever I buy the options now, there is reverse that market. 100%. 10 to 20 just points. reverse. Yeah, reverse. They were tie option buying in breakout. Buy with retracement or double bottom. Okay. For It's, option writing, you will use breakout, double top, double bottom, anything. Option writing out of the money. Because of option writing nature is become zero. But for option buying, never try to catch breakout price. Always use retracement price or double bottom price. Okay. I hope. Okay. I hope his doubt got cleared, I guess. Thank you. Yes. Thank you. Okay. Anand. Thank you so much. Bharat Modi, thank you so much. Is there any questions? I hope I'll just share the all 3 previous webinars in the chat board again. If someone has missed out or want to watch again, you can do that. Also, I'll just send you via mail and WhatsApp, I guess. Hello, sir. Yes, sir. Yes, Rajendra sir. Please tell me. Sir, only one doubt, sir. If any penalty in settlement that anything is there in settlement? Settlement, I think we have to check with Sendil. Sendil Veerappan, are you there, sir? Sendil Veerappan, sir? If I didn't close anything, put option or buy option, is there any? If I don't close means what will happen, sir? If I bought the call option, but I didn't close the position, if any penalty ever. I think we have Sendil Veerappan from BAC, I guess. I'll just answer. Aditya sir, do you have any idea on this? So normally, in the money option will, exercise from exchange. Out of the money, come to zero already. Okay, sir. Thank you, Rajendran. Okay, thank you. Okay, Aditya sir, I think we can just conclude the session, I guess. Thank you so much for the 4 episodes. Thank you so much, and we got like
a lot of views on our YouTube. We have we have published, once the webinar is done, we have published that webinar on our YouTube channel, Tradeplus YouTube channel. I think a lot of people liked it, and we can also plan to do this same session in English in future, I guess. So I think most of the people have just asked to conduct this in English, I guess, and they more like you, they're asking questions, and the nature is very good, and you'll be repeated questions is like they are expecting in English, I guess. I'll just have a word with Sindhil Veerappan regarding this. We can also conduct webinars on English in future. Thank you. Thank you. Thank you so much for Tradeplus team, and thank you so much BSc and Mahendra sir and whole team. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you, participant. Thank you everyone for participating in this webinar. So I hope I'll be sending the email to each and everyone about this webinar, and I'll also share the documents which have been shared by Aditya Chopra to me. Thank you. Have a nice weekend. Bye. Thank you. Same to you.